ये कितना गैप था आपका एमबीए और एसीसीए के बीच में? 2005 I qualified my MBA, got married in January 2006 and September 2006 moved to the UK with my husband. आपने ट्रेडिशनल रूट ना ज्वाइन करते हुए आपने कभी बिग फोर या उसका ड्रीम कभी you never had a dream to So basically my son was turning 3 okay. and that was the time when we had to decide कि अब lifelong लंदन में रहना है कि or do we want to come back to family or not. ऑटोमेटिकली कॉलिंग जो आपने ली आज उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी इंपैक्ट हो रही है उसकी वजह से? आज की डेट में if you say ACCA there are so many people, so many organizations that recognize and value ACCAs. Welcome to another podcast. Today we have Shilpi ma'am who has mentored at least 5,000 students for ACCA. Shilpi ma'am, welcome to the podcast today. Thank you so much Abhishek. शिल्पी मैम आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट करना चाहेंगे. एक्चुअली आपका लास्ट पॉडकास्ट मेरे बेटे ने देखा. मैं आप जानते हैं वैसे आरव को, तो आरव अभी 12th स्टैंडर्ड में है और कॉमर्स विद मैथ्स कर रहे हैं भाई साहब. और ठीक है, ही इज़ अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट, 90-95% ले आते हैं और उनका काफ़ी विचार है एसीसीए करने का और वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी हैं. बट उनका एक क्वेश्चन था कि वो ये जानना चाहते थे कि आपकी खुद की जर्नी कैसी रही इसमें, तो क्या would it be possible for you to share that? Absolutely. I mean, I will be very thrilled to share my journey with the students, prospective students, and especially these young students, because आज की generation I think हमारे time से बहुत different है. जी. They are very smart, they are very fast forward, they want everything in life because आजकल Blinkit का ज़माना है, instant gratification का ज़माना है, 10 minutes की delivery वाला ज़माना है. But yes, success obviously doesn't happen in 10 minutes. We have to work our way upwards towards it. True. But हाँ, आजकल की generation is very progressive. They need something which will give them more global recognition, more flexibility to choose, and I think that is something that ACCA definitely offers. मैम ACCA से शुरू ना करें. Why don't you start कि आपकी जर्नी एज अ स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड क्या थी और क्या आपने मेडिकल लिया या कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया और वहाँ से आपकी जर्नी आगे कैसे रही? बिल्कुल, शुरू से शुरू करते हैं. So I was born and brought up in Delhi. I did my schooling from Presentation Convent School, then moved on to do my BCom from Hansraj College, Delhi University. Then did my MBA in Finance and Accounting. It was like a dual specialization from again a university in Delhi. Then got married. So it was a little unconventional journey for me. So एक मिनट, आप ACCA आपने अभी तक नहीं किया? No, not yet. So I did my ACCA post my marriage. So I always wanted to do something which was not conventional, like the CA route or something like that. I wanted to go abroad and study, and luckily my in-law supported me in that. So I, along with my husband, moved to the UK after my marriage, where I started with my ACCA journey. And wow. This is 2006 I'm talking about. So और ये कितना गैप था आपका एमबीए और एसीसीए के बीच में? 2005 I qualified my MBA, got married in January 2006 and September 2006 moved to the UK with my husband. Oh my God. तो जब आप यूके मूव किए तो आपने वहाँ पर was it a full time affair in the sense that you got admission to college or was it that you were working as well as you were doing your ACCA? Yes, so I was a full-time student of ACCA and did my part-time work at Santander Bank. तो वो कुछ पैसे भी कमाने पड़ते हैं to be able to manage the expenses of living abroad. So my husband was full-time working and supporting obviously the family, and I was a full-time student and working part-time at a bank. तो कैसे रहा ये जर्नी? कितना टाइम आपने लगाया ACCA करने में और क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? So I started my ACCA in September 2006. Got 3 exemptions. उस टाइम पे MBA होने के बावजूद भी सिर्फ 3 exemptions. अच्छा, आज की तरह नहीं कि इतने सारी No. तो आज तो आसान है इसका मतलब फिर लोगों It's relatively much more easier. मतलब अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी हो तो you get 5 conditional exemptions. Wow. तो I was in MBA, फिर भी मुझे 3 पेपर की ही एग्जाम्पशन मिली थी and I started with the 4th paper. और उस टाइम पे 14 पेपर्स होते थे unlike the 13 papers right now. Exams used to happen every 6 months unlike the 3 the quarterly exams now.
तो बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी रही, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही डेफिनेटली। इंटरनेशनल जाना, मतलब यहाँ बैठ के लगता है दैट यू नो इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव, बहुत मज़ेदार लाइफ है, बट ट्रस्ट यू मी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट challenging as well as one of the most rewarding experiences of my life. जी, तो एग्जैक्टली जर्नी कैसे रही? मतलब आपने एडमिशन लिया, आपके पास पेपर्स आए, आपको 3 एग्जाम्पशंस मिले, उसके बाद आपने कैसे इसके लिए प्रिपेयर किया? बाहर जाके तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जाके कोई ट्यूशन ले लूँ, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता होता है। तो आपने उसको किस तरह से वहाँ के चैलेंजेस को फेस करके उनको कैसे सोल्यूशन निकाला उसका? So like I said कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तो it's become very easy, मतलब हम इंडिया में बैठ के without even incurring all of that international का खर्चा, all of that visa का problem, you can study international qualification sitting right at your home as well आज की डेट में तो। But at my time, that is 2006, I started off relatively काफी देर साल पहले, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फुल टाइम पढ़ते थे, जॉब भी करते थे, एंड एग्जाम्स एवरी 6 months 4 करके दिए मैंने इन सिंगल अटेम्प्ट। आई यूज्ड टू क्लियर ऑल माय 4 एग्जाम्स। तो आपने बिल्कुल कोई ब्रेक लिए बिना आपने पूरा एसीसी कंप्लीट किया? Yes, so तो कितना टाइम लगा आपको इसमें? So during this time I had my baby as well, तो Oh, wow, congratulations. Thank you. So professional level के एग्जाम्स में I had my baby. So 2006 में स्टार्ट किया, 2009 में I qualified my ACCA after having done all the exams in single attempt. Awesome. तो आप फिर इंडिया वापस आ गए या फिर you thought of continuing there in UK itself? नहीं, मतलब जब 2009 में खत्म किया तो I was a UK topper of ACCA tax paper as well. Wow. So because of all those credentials and everything, I got into a very good job as soon as I qualified. मतलब पढ़ने के टाइम पे भी I was working at Santander Bank, which was a relatively very good profile for a part-time student. Because जितने भी मेरे और friends और peers थे, वो सब odd jobs करते थे to meet ends. But I got into a good profile probably because I backed it up with an MBA and a BCom. So that's why I probably got into that role. But उसके बाद as soon as I qualified, I got hired by ZTV UK office, which is Asia TV Limited. Wow. So I joined their accounts department as an accounts executive as my starting role. But within a year's time, I got promoted as head of accounts and operations. Wow, that's pretty impressive. फिर ये ट्रांजिशन आप इंडिया में वापस आए, इंडिया में क्या करता था? So basically, my son was turning 3. Okay. And that was the time when we had to decide कि अब lifelong लंदन में रहना है कि or do we want to come back to family or not. And me and my husband both were very clear on this fact that we want to come back to family eventually. So I was very adamant on the fact that it's either going to be now or it's going to be never, because I did not want my I did not want my son to be like a confused desi कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा kind of. So उसकी schooling फिर मैंने यहीं से start करनी थी, and that's the reason why we came back. Awesome. फिर आपने इंडिया में आके you started up a job again? Yes, so see, ACCA, that's the beauty of the qualification, that it gives you the power to decide what you want, when you want, and how you want it. So I did not want to take up the traditional Big Fours or Big Tens wali job, because obviously my son was very little. Actually मेरा next question था आपसे कि आपने ट्रेडिशनल रूट ना ज्वाइन करते हुए आपने कभी बिग फोर या उसका ड्रीम कभी you never had a dream to honestly I never had that dream. Why? Because for me, see, like I told you, my journey, so it was not like I was like a fresh graduate or a fresh BCom. I obviously had to balance my work life at all points of time in my journey. So and plus the opportunities that I got were very rewarding. So Jesse, I came back to India. I got hired by a very leading stockbroking firm, and I was heading their NBFC arm. Wow. So all of that RBI compliance and everything I was taking care of. So it was very rewarding. Education क्यों? और जहाँ तक मुझे याद है, मेरा एक डिस्कशन था आपके साथ, आप जब अपना ACCA कर रहे थे तब भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, तो ये अंदर से did you have this feeling that I have to help students and create more ACCA students? You became a brand ambassador immediately after that time? Very interesting question. मैं बचपन की बात बताती हूँ आपको. So when I was a kid, I used to come back from school, and in my room I had this blackboard होता था उस ज़माने में, like the smart LED boards that kids have now.
वो ब्लैक बोर्ड पे मैं आर्टिफिशियल मतलब इमेजिनरी स्टूडेंट्स को शुरू से पढ़ाती आ रही हूँ, बचपन से पढ़ाती आ रही हूँ. So I think that calling was always there, that this is what I wanted to be always. So 5 years I worked for this NBFC. Then I had my daughter, and during this NBFC phase, there was a leading, education provider of ACCA who kept reaching out to me to take up ACCA trainings. But उस point of time पे obviously I had a lot going on, तो मैं नहीं start कर पा रही थी. आपने जॉब के साथ ट्रांजिशन किया ACCA की ट्रेनिंग के लिए? No, I did not actually. So it was my second delivery, so I had my daughter. I took a career break, and that is where I reassessed myself. That I've got bigger and more, you can say, responsibilities now. Calling भी था अंदर से कि I have. It was always there. Like I said, मैं बचपन से ही शायद I was made to be a teacher kind of a thing. I'll not call you a teacher. I think you're more of a mentor, and that has come across so many times. I mean, so many students who really love you, who come back and. मुझे उस दिन किसी ने मिठाई खिला रहे थे, मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए. ये भाई साहब प्योर हरियाणा से आते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते, और उनके एग्जाम्स सारे क्लियर हैं, उन्हें एंड वो सारा क्रेडिट आपको देते हैं. तो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक दैट्स एन इम्पैक्ट व्हिच यू आर क्रिएटिंग. थैंक यू सो मच. मेरे को बोला गया जब कि मैं अपने गांव में सबसे पहला ACCA होऊंगा. वो कितनी बड़ी उनके लिए उपाधि है अपने आप में. वो एक ऑटोमेटिकली एक कॉलिंग जो आपने ली, आज उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी इम्पैक्ट हो रही है उसकी वजह से. आई थिंक वो शुरू से ही था. सो आई वाज as soon as I did my ACCA, I started, there were many students who started reaching out to me because ACCA in India had really picked up at that point of time. तो मैं एक unofficial advocate type बन गई थी already ACCA की, where I used to give out and help and just mentor students unofficially, I can say. But I think my daughter has been extremely lucky for me because she really put me where I was meant to be always. एक अगर small estimate लगाया जाए तो आज तक आप कितने students को mentor कर चुके हैं? I've not really counted, but I think over the last 10 years or so since I've been mentoring ACCA students, तो more than 5,000 तो definitely है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा. जिस हिसाब से चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जिस हिसाब से iPhone 1 से लेकर iPhone 16 की जर्नी रही है, और हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखे हैं, आपको लगता है कि अकाउंट्स में या स्पेसिफिकली ACCA में भी इस तरह के चेंजेस आप प्रिडिक्ट करते हैं कि AI का यूज़ होगा या कुछ और चीज़ों के बारे में आपको लगता है कि यहाँ पर भी चेंजेस होंगे उस तरह के? Goes without saying. I think accounting is one of the industries which is going to be most impacted by AI, and in a very positive way. See, अगर हम ट्रेडिशनल एक अकाउंटेंट की बात करें तो हम वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में ही शायद उलझे रहते थे. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ AI, accountants are going to be more of decision makers than getting themselves occupied with the mundane task of balancing a balance sheet. Basically वो डेबिट क्रेडिट एंट्री में नहीं उलझे रहेंगे. All of that can be system driven, all of that can be AI driven. अब coming back to your journey, I'm sorry मैं थोड़ा सा बीच में भटक गया, but coming back to your own journey, आप यहाँ से अगले 10 साल आप क्या देखते हैं? So like I said, अगर मैं पिछले पहले 10 साल देखूं, since I started into this mentoring and this teaching field of ACCA, उस टाइम से लेके आज की डेट में, so 10 years back and today, the industry has really blown up in India. मतलब अगर आप सिर्फ एक करियर्स पोर्टल का लिंक ही ओपन करके देख लोगे, the kind of opportunities which are available to ACCAs right now as we are speaking is tremendous. मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे. मतलब when I qualified और 2009 में वापस आई थी, तो कोई पूछता था ना कि क्या मतलब what have you done, तो मैं ग्लोबल CA बोलती थी या UK की CA बोलती थी एक तरीके से. जी, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाती. Yes, because there was not much recognition or awareness about ACCA at that point of time. But आज की डेट में if you say ACCA, there are so many people, so many organizations that recognize and value ACCAs. एक छोटा सा क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट. आपने ट्रेडिशनल रूट नहीं लेके बिग फोर को ज्वाइन नहीं किया, क्या आप ये एडवाइस आज भी देंगे कि आप ACCA कंप्लीट कीजिए और अपनी कॉलिंग पे जाइए rather than एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल रूट फॉलो कीजिए? Again, I think a very interesting question, but it would be very subjective to your own calling, like you said.
कि what really excites you. Definitely that brand name of a big four is important. I will definitely never undermine it. But then again, you prioritize what really you want. Are you someone, you know, who is willing to take and give that kind of commitment, that kind of balance, that kind of effort that a big four requires? Or do you want to not go the traditional route and still be very successful? I honestly owe every single bit of the, you know, the money that I earn today to this qualification, which is ACCA. No MBA, no BCom gave me what ACCA really, you know, gave me. एक कॉलिंग जो स्टार्ट किया था आरव से, तो मैं वापस आरव से ही एंड करूंगा इस आरव का ये मानना है कि वो ACCA करके थोड़े टाइम इंडिया में काम करना चाहेगा और उसके बाद वो अब्रॉड सेटल होना चाहता है। क्या वो कॉलिंग ठीक है या Why not? See, definitely. आज, like I said, like जब हमने शुरू में बात करी थी तो यही बात करी थी कि today's generation is very progressive. Correct. They are very clear in their, you know, कि what they really want from their life. कि आपको इंडिया में सेटल होना है तो then probably traditional CA will give you, you know, more local opportunities. But अगर आपका विजन ग्लोबल है, अगर आपका विजन ये है कि भाई मैं इंडिया में प्लस maybe, you know, in 5 years down the line or 10 years down the line कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, UK, UAE, सिंगापुर में सेटल होना चाहता हूँ, तो you have the local qualification which is there. Wow. So that transition is going to be seamless for you. Trust my words, that transition is going to be seamless for you. और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि आपके पास UK, UAE, सिंगापुर की local accounting qualification है. Awesome. So that is, you know, how it is going to be for you. Thank you so much for your time, Shilpi. I'm sure this was a value-added podcast for a lot of students, a lot of parents like me who keep wondering कि उनके बेटे या बेटियों के लिए आगे का career progression किस तरह से हो. And I'm pretty sure that you are available in case अगर कोई भी student या कोई भी parent अगर आपके पास आना चाहे, आपसे personally मिलना चाहे, तो क्या ये संभव है? Absolutely, I'm available all times. And this is something which is very close to my heart. So I don't do it like a job kind of thing. This is my passion. To mentor students, to guide students. आप जो उनकी जिंदगी पे इम्पैक्ट करते हैं, उनके करियर पे इम्पैक्ट करते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। Thank you so much, Shilpi, for your time. Thank you so much. We all really look forward कि आप नए कीर्तिमान establish करें और अच्छा करते रहें। Thank you so much. Thank you so much.